Hello and a very good morning. Welcome to episode 2 from राजस्थान. अभी सुबह के 5 बजे हैं, 5 एक्चुअली बजने वाले हैं. इट्स 4:50 राइट नाउ. 5 भी नहीं बजे बट आई एम अप एंड आई एम रेडी बिकॉज वी आर गोइंग टू जयपुर. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा मैं उदयपुर में हूँ, तो येस राइट नाउ मैं अभी उदयपुर में ही हूँ, वहीं पे जहाँ पे रह रही थी. एंड जस्ट वेटिंग फॉर माई ड्राइवर टू कम. आई हैव जस्ट गॉटन रेडी. तो द ड्राइवर विल बी हियर इन अनदर 5 to 10 minutes and then we shall leave for Jaipur. The reason I've woken up this early is क्योंकि मुझे ट्रैवल टाइम में ज़्यादा वेस्ट नहीं करना था मेरा दिन, which is why I'm leaving at 5 AM ताकि at least by noon I can reach Jaipur. It takes about 6 to 7 hours by road. So yeah, let the driver come and then we will leave for Jaipur. तो we've taken our pit stop to have चाय और बहुत ज़्यादा ठंड है और चाय पीने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. We were all dozing off in the car. All मतलब Pratik and I were dozing off in the car and the driver. But we need to have tea now and it's super cold right now. Pratik is still struggling to wake up. How girls can wear a dress in this cold? How? राजस्थान की खाली सड़कें और सुबह की सर्द हवा. A drive like this is meant to be enjoyed with windows down and spirits up. खैर उदयपुर से जयपुर जाते जाते रास्ते में you'll find a wonder that even I wasn't aware about. Thanks to Khan Saab, my driver who brought me here. Kishangarh is a place dedicated to marble manufacturing and it thereby has this large space working as its dump yard. You'll see bright whites as far as your eye can see and also little crystal blue ponds here and there. ये जगह में आकर ऐसे लगेगा कि मानो इंडिया में नहीं आइसलैंड आ गए हो. I mean, who knew a dump yard can look like this, है ना? और किशनगढ़ से तकरीबन 2 घंटे और ड्राइव कर I reached the Pink City, Jaipur, and also my hotel here, Sabha Haveli. The word Sabha in Urdu means a breath of fresh air, and that is the best way I can describe this place. करीब 200 साल पुरानी ये हवेली gives off completely vintage vibes right as you enter. And once you do, you'll find a tall structure looking back at you adorned with antique doors. इस हवेली में टोटल 10 रूम्स हैं और एक स्वीट. Let's go check out my room. अंदर आते ही everything here just screams timeless. From the bed to the intricately done up decor, every piece of furniture, it's like entering a period film set. Well, what can I say? अगर आओ कभी हवेली पे meant this one, then I'd surely be up for it any day. और बाथरूम देखोगे? No, seriously, this one's worth a watch. So apart from a dining area, यहाँ एक in-house restaurant भी मिलेगा, one that you're looking at right now. अच्छा, and be ready to witness beautifully done up paintings and motifs all over the walls here. got out of the property now और हम जा रहे हैं सिटी पैलेस.
a very, very beautiful and a very popular attraction out here in Jaipur. If you come to Jaipur, City Palace is a must visit. और ये मैं तो मैं कह रही हूँ बिना जाए भी, but because I know for sure how amazing that place is. So I'll tell you more details about the tickets and what's there in for you to do and all of that once we get there. But yeah, right now we've just quickly headed out of the hotel for City Palace and a couple more places that we want to visit in Jaipur today. जयपुर में आकर सिटी पैलेस को विजिट करना इसलिए जरूरी है कि these heritage buildings are the ones that will take you right under the skin of the city. इनका आर्किटेक्चर कह लो या फिर palatial grandeur, get ready to be lost in a timeless era until you're here. You need to get a ticket to enter here and the details of all ticket prices will be mentioned in the description as always. City Palace में आप गाइड भी हायर कर सकते हो at an additional cost who will take you around each place. यहाँ से निकलकर I ended up at the spot that pretty much defines Jaipur in terms of architecture. इस pink structure को कौन नहीं जानता? The beautiful Hawa Mahal is an architectural wonder. And the best place to view it without being pushed by crowds is the Tattoo Cafe जो इसके bang opposite है. The Hawa Mahal has 953 windows to let wind in and out and hence the name. The Hawa Mahal has 953 windows to let wind in and out and hence the name. I'm here to have some very local food जो है यहाँ की प्याज कचौरी and कांजी वड़ा. कांजी वड़ा I've not even heard of or not even had it before. It's something very different. But प्याज की कचौरी I know it's very famed and it's very popular over here. So I'm looking forward to trying that. Let's see what it tastes like. So it's basically stuffed kachori. I think it's stuffed with pyaz. Okay, so the kanji vada is like okayish. Like on a scale of 0 to 10, I would rate it somewhere around 5 or 6. For me, it's okayish. So basically, what I felt is that this is like another different version of rasam vada that we have. And rasam vada is like really served piping hot, right? The rasam is really hot and spicy. This is very cold. This is like pani puri ka pani. It's very thanda pani, and it is. इसपे जो मूंग डाले हुए ये मूंग का ही पानी है. So the water is cold in temperature, but it's good. It's a very different thing to try, but it's not very great. But the pyaz ki kachori is really good. That kind of does live up to the hype for me. Also, यहाँ पे there are different kachori places which are really popular. Like there is Rawat ki kachori, which is really famous. We're actually sitting right back opposite Rawat because Rawat was really crowded, and we didn't want to like stand in the crowded area. We wanted to dodge the crowd, so we came opposite to that. But there's that also. If you want to pack some kachoris and take back home and stuff, it has a long shelf life. I believe it stays up to 3 to 4 days, so you can take it as well. Alright, so after that kachori place, now I'm going to go to have some chai at this place which is called as Gulab Ji Chai. It's a famous chai wala. Chai har jagah yahan pe achhi milti hai, but I've heard a lot about this, and when I was doing my research and looking up for places, this guy kept coming up over and over and over and over again. So I thought, chalo, yahan pe aa hi gaye hain, so might as well go and find out ki aisa kya khas hai. So Gulab Ji ki chai peene ke liye bas chal hi rahe hain inki gali mein. It's a quaint small gali like you can see. And ऊपर वहाँ पे है गुलाब जी चाय वाले. So let's go find out what's the big deal about Gulab Ji. तो शाम होते ही I was back at Sabha Haveli, which honestly was a totally different picture once the lights come up. So
we're at the terrace of Sabha Haveli, which is very beautiful, but इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है and it's super cold and my hair's wet because I just washed it, so I am freezing. Pratik is not freezing, but I am freezing. बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. कितनी ठंड होगी अभी? 15 डिग्री. 15 डिग्री वैसे तो लोगों को इतनी ज़्यादा नहीं लगती, पर हमें बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि हवा चल रही है अभी फिलहाल, इसलिए 15 नहीं, not 15. Let me check. I feel it must be lesser अभी at this time. It's 20. It's 20. But it feels like 15. Feels like 15. For me, I think personally it feels like 5. मेरा थोड़ा अलग चल रहा है. और डिनर के बाद प्रतीक एंड आई वेंट अप टू द हवेलीज टेरेस. तारे ऊपर आसमान में थे या नीचे जमीन पे गिरे हुए पता ही नहीं चल रहा था. द सिटी अंडर द मून लुक्ड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 2 इन जयपुर. तो सुबह सुबह मेरी सवारी कहाँ निकली है ये जान लो. गुड मॉर्निंग. सुबह के 7 बजे है और हम आए हैं एल्बर्ट म्यूज़ियम जयपुर में, जहाँ पे हमें कुछ शॉट्स लेने हैं क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम टू टेक शॉट्स अर्ली मॉर्निंग, जब ज़्यादा लोग नहीं होते, भीड़ नहीं होती, आवाज़ नहीं होती, काम क्वाइट, इट्स नाइस और शॉट्स भी अच्छे मिल जाते. तो ये शॉट्स आप इसी वीडियो में देखोगे, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे. इफ यू स्टिल नॉट फॉलोइंग, इट्स @gmail.com, so do check that out. And I'll show you Albert Museum in a minute actually. जयपुर के राम निवास बाग में खड़ा ये म्यूजियम सिटी का सबसे बड़ा और यहाँ का स्टेट म्यूजियम माना जाता है. इट हाउसेस कलेक्टिबल्स फ्रॉम द 19th century and it is beautiful inside out. So we've managed getting some amazing shots with the kabutars courtesy. A lot of other people who were there also for getting shots. So we all helped each other fly the kabutars for the shots. That's how this works. अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए क्योंकि सुबह का वक्त है और हम ऐसे ही निकल चुके थे, तो अभी हमें चाय पीनी है. So we're going to find a local spot जहाँ खान साहब हमें लेके जाने वाले हैं. यार देखो, चाय पीने का मजा ना 2 सिचुएशंस में मुझे सबसे ज्यादा आता है. एक, जब चाय की तलब सबसे ज्यादा लगी हो और मिल जाए, और दूसरा जब किसी नए शहर के कोई क्वेंट से लेन पे टपरी ढूंढ के वहां पे चाय मिल जाए. यहाँ दोनों है. तो चाय तो पी ली, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए आई हेड बैक टू सबा हवेली. राइट ऑपोजिट द हवेली दे हैव देयर ओन गार्डन स्पेस, जहां एक खूबसूरत सेटअप के साथ ब्रेकफास्ट वाज अवेटिंग मी.
ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम निकले हैं टू गो अराउंड सम प्लेसेस इन जयपुर. द फर्स्ट स्पॉट दैट वी आर गोइंग टू इज गदोर की छतरियाँ. दिस इज बेसिकली वेयर द रॉयल्स वर क्रिमेटेड. ये जो जगह है ये 18th सेंचुरी में जो राजा थे इन्होंने ये जगह चूज करी थी टू क्रिमेट ऑल द रॉयल्स. सो बेसिकली जो टूम्स है that is where all the royals were cremated. It's a beautiful place to visit. It's a lesser known spot out here, but it's definitely worth a visit. Whether it's actually worth a visit or not, let's find out together once we go there. मैं भी पहली बार जा रही हूँ, so let's go and see what this place is like after all. This is a great spot to visit अगर आप हिस्ट्री और आर्ट के फैन हो. खैर अब मुझे तो आर्ट हर चीज में नजर आ जाता है, लेकिन here you will find beautifully done up structures, tombs and windows. कुछ भी कह लो, जयपुर में आपको भर भर की कला और बारीकी देखने मिलेगी. जयपुर आकर शीश महल नहीं देखना वुड बी एन इनकम्प्लीट ट्रिप, है ना? वैसे आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन दिस अंबर पैलेस स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन इन द 16th सेंचुरी और जो आप अभी देख रहे हो यहाँ तक इसे कंप्लीट होने में पूरी 1 सेंचुरी लगी. दैट इज 100 years. यहाँ भी you can hire a tour guide if you want one and visit the numerous spots and corners of the palace, each one with a background story. Of course, the highlight though is the Sheesh Mahal or the Palace of Mirrors. इस महल में शीशे कॉनकेव है, यानी कि ये सनलाइट को कुछ इस तरह से रीडायरेक्ट करते हैं कि सारा महल लिट अप हो जाता है. What a marvel, isn't it? किसी नए शहर में जाकर वहाँ से कुछ तो नया सीखकर मैं घर वापस जाने की जरूर कोशिश करती हूँ. जैसे कि ये मैं बेहद बेसुरे सुर पकड़ने के बाद मैंने गिव अप तो कर दिया, लेकिन फोटोज अच्छी आ गई. Alright, I've got myself some kachori in curry, which is the first time I'm even hearing it and going to be trying it. So here it is. Let's give it a shot and see how it tastes. It's a super interesting combination because the curry is really khatta and really like thick. And then there is like a crunch from the kachori in itself. So it's crunchy, it's spicy, and it's a little bit khatta. It's an amazing combination. I just had like one bite, but it's an amazing combination. So now I'm just going to go eat in peace. See you in some time. So Fort Nahargarh is yet another marvel that you must visit. I didn't want to go inside the fort, तो fort को लगकर ही जरा ढूंढने के बाद I found myself this perfect spot. So I head back to Sabha Haveli for lunch, and upon request they served up an authentic Rajasthani meal. Next up, I visited the popular Patrika Gate of Jaipur. कहने को तो बस ये एक गेट है, लेकिन the pop of pink, the intricacy of the carvings, the walls and the paintings put here are all worth a visit. And there's no entry ticket here. खैर पिछले एपिसोड में उदयपुर के हाथी पोल मार्केट से शॉपिंग जरूर की थी, लेकिन मन तो मन है, भरता कभी नहीं. और जयपुर के बाजार एड अप टू स्पॉइलिंग यू फॉर चॉइस.
So I ended up at Jaipur's famous Johri Bazaar to pick up few items. There's also Bapu Bazaar that you can visit for the local prints, jewelry, bags or footwear. अच्छा मेरी शॉपिंग तो खैर चलती रहेगी, तो अभी इस वक्त के लिए अलविदा. Stay tuned because I'll see you guys from another destination soon. Until then, goodbye.